Hello बच्चों, as you can see that there is a picture and an apple is falling on the head of a person, and you can recognize that by the name given on this, that Isaac Newton. You know this phenomena very well, and the incident taken place with the Newton, Isaac Newton, and he think that how is it possible that every object is falling towards the earth. He studied, he thinks, and he reached to a conclusion and gave the some theory related to this incident. Okay, so let's move on and study the today's topic, the today's chapter, the gravitation. Okay, let's see what is it. He gave the formula to find the force on every object around the earth surface. He gave the principle or law about the gravitation, which is famous as the Newton's law of gravitation. He told that every particle of the matter attracts every other particle with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of their distance between them. Okay, let's suppose two particles of this universe anywhere, two particles of mass m, small m and capital M, and the distance between them is r. Then he gave the formula F is directly proportional to m and inversely proportional to r square. So he got this formula F equal to gmm upon r square. Let's see what happens if two particles, let us consider two particles m1 and m2 are situated at the point r. Then the particle 1 exerting a force on particle 2, as similarly the particle 2 is exerting a force on particle 1. So we can calculate this force by the product of their masses and the square of their distance between them. The formula is given in the picture. G is the gravitational constant. Okay, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जैसा हम जानते हैं F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 m2 लिखेंगे, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर लिखेंगे. सो कंबाइन करेंगे तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 m2 अपन r स्क्वायर होगा. उस प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया जाएगा, दैट इज कैपिटल G, विच इज नोन एज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, हुज वैल्यू इज 6.67 इंटू 10⁻11 Newton meter square per kilogram square, and you can see in this slide. Now what is the capital G and what are the difference between capital G and small g? एक्चुअली 9th क्लास में हमने पढ़ा है कि स्मॉल जी भी कोई चीज़ होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं इसको, और ये कैपिटल जी. देखिए दोनों में बहुत अंतर है, बोलते हैं इनको भी जी हैं और बोलते हैं उनको भी जी हैं, तो दोनों को भी जी बोलते हैं लेकिन जी में अंतर है ना. ओके, तो जी, कैपिटल जी जो है ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जबकि स्मॉल जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. द वैल्यू ऑफ कैपिटल जी नेवर चेंजेस, कांस्टेंट थ्रू आउट द यूनिवर्स, बट स्मॉल जी चेंजेस. इट चेंजेस एट द डिफरेंट प्लैनेट. द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी डिफरेंट एट द डिफरेंट पोजिशंस above the earth. G changes towards the center, down to the surface. G changes, small g changes, but capital G remains constant. Okay, so let's move forward and see how the small g changes and how we can calculate it. Okay,
The relation between capital G and small g. What are the relation? As we know that the gravitational force is gmm upon r square. If m is taken as the earth mass and small m taken as the any object mass on the earth surface, and small g is the acceleration due to gravity, where r is the radius of earth, then we can write this relation gmm r square. This is the gravitational force and this is the mg is the weight. किसी पार्टिकल पर लगने वाला वेट उसके ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है, तो एम जी इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर लिख सकते हैं. हेयर वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी बाय रिमूविंग द स्मॉल एम फ्रॉम द formula. So we can calculate the small g by this formula mg equal to gmm upon r square. mg क्या है? mg वेट है बेटा, और gmm अपॉन आर स्क्वायर एक ग्रेविटेशनल फोर्स है. ये वेट ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही, तो इसलिए हमने इसको इक्वल लिखा है. सो वी कैन कैलकुलेट द स्मॉल g इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर. m इज द अर्थ मास.